IMA के महिला विंग ने आज होटल डायमंड में वर्ल्ड वैक्सीनेशन वीक में जागरूकता अभियान सह CME का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन कैमूर IMA की वरिष्ठ महिला चिकित्सक डॉक्टर किरण सिंह भभुआ एवं कैमूर IMA के महिला विंग के अध्यक्ष डॉक्टर अनीता सिंह ने संयुक्त रूप से किया। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर किरण सिंह मोहनिया ने गर्भवती महिला को वैक्सीनेशन और नवजात शिशु को वैक्सीनेशन कराने पर सभी चिकित्सकों को मरीजों को सलाह देने की अपील की। CME में कैमूर IMA के महिला विंग के ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रतिष्ठित महिला चिकित्सक डॉक्टर प्रतिभा पांडे ने HPV वैक्सीनेशन पर एक शानदार प्रस्तुति दी और उपस्थित चिकित्सकों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराने के प्रति जागरूक किया। CME में आमंत्रित IMA अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश्वर मंटू को गुलदस्ता देकर दोनों वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर किरण सिंह ने सम्मानित किया। अंत में धन्यवाद देते हुए डॉक्टर मंटू ने महिला विंग के उपस्थित चिकित्सकों को कैमूर IMA के सदस्य बढ़ाने और रेड क्रॉस भवन मोहनिया के जीर्णोद्धार की अपील की। CME में कैमूर के उपरोक्त चिकित्सक के अलावा डॉक्टर मीना पाठक, डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, डॉक्टर आकांक्षा, डॉक्टर रीचा, डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर वंदना सहित कई वरिष्ठ महिला चिकित्सकों ने भाग लिया। सभी चिकित्सकों ने अधिक से अधिक लोकतंत्र के महापर्व पर मतदान में भाग लेने की अपील की। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट। So we are presenting topic about vaccination in pregnancy. As we all know that which vaccine has not to be given. Now we are here to discuss which vaccine has to be given. Since we are not using it, maybe I am not using it, all of my practices. Since we have adopted, only 3 vaccines are recommended by CDC and one is recently coming out. That is for respiratory syncytial virus, but it will be manufactured by Pfizer. But they have not given the permission and FDA has not approved that vaccine. So we are discussing here only 3 vaccines which will be given. That is influenza vaccine, tetanus, diphtheria, toxoid along with pertussis. That is pertussis, acellular pertussis has been added in which is called as TDMP vaccine. Now they have selected in government. First we have to know that what government is giving, because we have to. It is in National Immunization Program. What they are giving is tetanus and diphtheria only. That is TD vaccine. But now GSK come with the another vaccine, that is TDAP with brand name Boostrix, that has tetanus, toxoid, diphtheria and acellular pertussis. And third one is COVID-19, which has to be given by the government, and we have to be updated regarding COVID-19 vaccine. These vaccines are with common side. They don't have any side effects. They have common side effects like injection site, redness, soreness, mild fever and headache. Now we will be discussing TDA. Why TDA? Why there is a need to add pertussis in the tetanus and diphtheria along with? The burden of the disease is very high and it is very contagious and infant mortality rate is very high. We all come across that मैडम 5 दिन के बाद घर गए निमोनिया हो गया, मैडम 1 महीना बच्चा रहा निमोनिया हो गया. तो this vaccine is going to give immunization, in fact protection to the baby after the birth. The same mechanism is there, antibodies from placenta to baby, that will be from mother to baby. Same mechanism. Recommendation is only single dose that has to be given after 24 weeks of pregnancy. Most preferably it is 27 to 36 weeks of pregnancy. Similar, it is intramuscular. FDA has approved only GSK with the brand name Boostrix. Okay, and what we do after 24 weeks, we counsel about pertussis. ले लीजिए, बच्चे को निमोनिया नहीं होगा. आप निमोनिया का वैक्सीन देने के का टाइम जो है वो लेट से आता है. इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो होता है, जो भी हम लोग देते हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स के लिए, दैट इज रिकमेंडेड आफ्टर 6 months ऑफ लाइफ. तो 6 months ऑफ लाइफ के लिए एंटीबॉडीज बच्चे में रहे माँ की तरफ से, तो वो देते हैं हम लोग. ये काउंसिल करना होता है एज आर पार्ट कि पेशेंट को हम लोग काउंसिल करें. थोड़ा सा कॉस्टली है, मार्केट में इसका रेट 1200 से 1300 का है. इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, pregnant women immunocompromised, they are at more increased risk. Mostly it is given
in third trimester of pregnancy, but can be given in any trimester. Influenza का season जो होता है that is high in September and October, so preferably that should be given in September and October. But whenever there is need, you can give. Prevents infection in pregnant and early months of life of infant. But all persons more than 6 months of age should receive influenza vaccine annually, including us also, which we are not taking. The flu vaccine is only intramuscular vaccine has to be given, not nasal. It is live attenuated. That intramuscular is inactivated flu, and the name is Influvac by about 0.5 ml. That's it. COVID in pregnancy, the vaccination is recommended in pregnancy. It should be updated as per guidelines of the government. Finished. In special situations, some vaccines are also recommended, like hepatitis A vaccine. Whenever you are visiting an epidemic country, whenever you are getting more and more infections of hepatitis A, that can be given. 2 doses, 6 months apart, are going to provide you immunity. Hepatitis B vaccine can also be given in pregnancy. In special circumstances, explaining the risk that if you are going to take the vaccine, there may be chances. Mostly the persons which we face, एक partner is hepatitis B, my husband is hepatitis B positive, female is not. They are sexually active in pregnancy also. So for that thing, we can give hepatitis B. The females who have multiple sexual partners, I don't know, we never came across all this kind of patient, but these vaccines can be given.